this chapter before proceeding to the trigonometry. It is very important to study this chapter. So please pay attention and start writing. मेरे साथ साथ ही लिखें, ठीक है? First of all, bacha, you should know that what a line is. Okay, line is made up of all 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. See, I'm connecting all the dots. See, by connecting points, we can get a line. We can get a line. मैथ स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट. मैथ्स जो है वो स्टार्ट हुई थी पॉइंट से. जब बहुत सारे पॉइंट्स मिले तो दे मेड अ लाइन. और लाइन के अंदर जो वी यूजुअली कम अक्रॉस इन चैप्टर्स, सो ये याद रखें कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ लाइंस. एक होती है हमारे पास पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस पैरेलल लाइंस हैव सेम डायरेक्शन, have same direction, or different direction, have same slash different direction, या different की बजाय opposite लिख देता हूँ. have same slash opposite directions. They never intersect each other. They never intersect each other. For example, you can see that this line is traveling in this direction. This line is also parallel to this one. Now you can see that this line is also parallel to these two, but the direction is opposite. So remember that parallel lines, they have the same direction. They can have the opposite direction as well, because they both will never intersect each other. Do you agree with me or not? Then we have the Yes, yes. concept, then we have the concept of perpendicular lines. Perpendicular lines. Those lines which intersects at 90 degrees angle. जो 90 डिग्री एंगल के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं. बेटा साथ साथ लिखें. अच्छा, मैं जरा लाइट थोड़ी चेंज कर रहा हूँ एक्चुअली. ओके जी. Those lines which intersect at 90 degree angle are perpendicular lines. Are perpendicular lines. For example, see, this is a vertical line. Let me connect one more black line here. You can see that both the lines, they are intersecting at 90 degrees angle. So these lines are called as perpendicular lines. Remember that angle at a line is 180 degrees. एक लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो 180 डिग्रीज होता है. यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट. आपने इस फैक्ट को जो है वो याद रखना है. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? कैन आई प्रोसीड? आसान आसान चीजें, इतनी मुश्किल नहीं है. स्टेप Yes, वाइज sir. कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, नाउ देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स. कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स. ओके, व्हेन two lines meet, they make an angle. They make an angle. For example, two lines are also meeting at this point. For example, see, two lines are meeting each other. So these are called as angles. Like for example, this is 90. It must be less than 90. It is greater than 90. And we can also have one more angle like that to show. See, that is also angle.
We have four types of angles in maths. ये याद रखें, चार तरह के angles हमें देखने को मिलेंगे. First one, you should know that the first angle is right angle. Right angle is 90 degrees. Second one is acute angle. Acute angle is when theta is, theta बेटा angle को बोलते हैं, मैंने theta बना दिया है, when theta is greater than 0, but at the same time this theta is less than 90 degree, so that would be acute angle. Third angle is obtuse angle. ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं कि जब आपका एंगल जो है थीटा जो है वो बड़ा हो 90 से, बट एट द सेम टाइम आपका थीटा जो है वो 180 से छोटा भी हो, तो उसको ऑब्ट्यूज कहते हैं. मतलब 91 से लेके 179 तक हो सकते हैं, 179.9 तक, ठीक है. एंड द फोर्थ एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल. Reflex angle is when your theta is greater than 180 degrees and at the same time your theta must be less than 360. So that angle is called as reflex angle. इनको reflex angle कहा जाता है, ठीक है. सो अब आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिख रहा हूँ. फॉर एग्जांपल आप मुझे बताएं 90 डिग्री इज व्हाट विच एंगल बचा. 90 डिग्री इज which angle? What is the mathematical name for the Right 90 degree? angle. It is right angle. Okay. What is the mathematical name of 143 degree? Obtuse angle. Yes, it is obtuse angle. What is the mathematical name of 190 degree? Reflex angle. Reflex. Well done, well done. It is reflex. And what is the mathematical name of 45 degree? Acute angle. वेल डन. तो ये बेटा ये भूलना नहीं है, ठीक है. अब जरा समझ डालें, रूल ऑफ फिंगर्स को समझें, ठीक है. फिंगर के रूल को समझ डालें थोड़ा सा. रूल ऑफ फिंगर ये कहती है व्हेन टू फिंगर्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दे मेक 90 डिग्री, ठीक है. व्हेन टू फिंगर्स दे आर कॉन्ट्रैक्टेड दिस वे, दे आर कॉन्ट्रैक्टेड this way, so this angle is acute angle. Okay, this angle is acute angle, but when two fingers they are open more than 90 degrees, so they will make an obtuse angle, ठीक है. And this lower angle would be the reflex one, and this angle will be the reflex one. Yes or no? Yes or no everybody? Yes, sir. सो इस चीज़ का आपने पूरा पूरा ख्याल रखना है कि आपको इस चीज़ का आइडिया पूरा हो, ताकि आगे जाके मुझे ग्राउंड बना रहा हूँ ताकि आगे आसानी हो जाए मुझे, ठीक है. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल फैक्ट्स टू रिमेंबर. फैक्ट्स टू रिमेंबर, ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी पिछली क्लासेस में, एक रिवीजन हो जाएगी. पहला फैक्ट है एंगल एट अ पॉइंट इज 0 डिग्री और 360 डिग्री. बेटा ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे if for example I am standing here and if I take one complete rotation I'm standing at the same position. Do you agree with me or not? Yes, sir. Or if I do not rotate I'm still at the same position. Yes or no? So remember that one thing in maths, you should have to remember that angle at a point is 360 degrees. Angle at a point is what? 360 degrees. Point B, remember के लिए, that angle at a line is 180 degrees. You can see that this is a black line, and for example this is angle, so this angle is 180 degree. Point C, when okay, for example this angle is 45, so this angle will be what? 45.
So can I say that x is equals to 90 degrees minus 45 degrees? Yes or Yes, sir. no? When the sum of two angles is equal to 90 degrees, what is the name of angle? Right angle triangle. The right angle. No, no. When the sum of angles equals to 90 degree, they are called as complementary angles. Complementary angles. पढ़ा है बेटा पहले कभी? जी सर पढ़ा हुआ है। ठीक है. Look at this. That point to remember, it is point D. For example, if this angle is 65 degrees, what is the value of x? 180 minus 65. 180 minus 65. So 180 minus 65 is 115 degrees. So I can write a fact here. When the sum of angles equals 180, Supplementary angles. so they are called, yes, supplementary angle. They are called supplementary angles. ठीक है जी. कि जब तो दो एंगल हों या दो से ज्यादा हों और उनका सम अगर 180 आ रहा है तो उनको सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है मैथ्स में. और अगर दो एंगल उनका सम जो है, दो या दो से ज्यादा एंगल्स हैं और उनका सम जो है वो 90 आ रहा है तो उनको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं. ठीक है जी. अब जरा थोड़ा सा चीजें समझ डालते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए पैरेलल लाइन थ्योरम, पैरेलल लाइन एंगल्स पे, पैरेलल लाइंस एंगल्स पे. सी बच्चा, two lines are parallel. Let me intersect a line. It is a transversal line intersecting both of them. Let me make some angles here. This is angle A. So this will also be angle A. Why? They are called as alternate angles. इनको क्या कहा जाता है बेटा? Alternate. Alternate angle कहा जाता है. फिर दूसरा एंगल है हमारे पास, दूसरा एंगल है हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. So vertically opposite angles हम किनको कहते हैं बेटा? Vertically opposite angles are on parallel lines. Let me draw transversal. For example, Arsh, if this angle is B, so the opposite one will be also B. Yes or no? Yes, sir. So they are called as vertically opposite angles. But remember that alternate angle हो जाए, vertically opposite हो जाए या corresponding angle हो जाए, ये सिर्फ और सिर्फ parallel lines में होगा. If the lines are not parallel, you cannot use these angles, okay? Now we have the corresponding angles. Corresponding angles. Okay. See, this red line is parallel to this red line. Let me draw a transversal. मैं transversal बना रहा हूँ. Do you think, Arsh, that this angle is also equals to this angle? Yes, sir. They are called as the corresponding angles. इनको corresponding angles कहा जाता है. Okay. And the last one we have is co-interior angle. Co-interior angle of a line. Okay. So
जी बेटा, मेरी आवाज क्लियर है सबको? कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, सॉरी, sir. अपॉलॉजीज, Yes, sir. इंटरनेट राउटर कुछ ऑफ हो गया था शायद। ओके जी। So co-interior angles. Okay, please listen to me very carefully. For example, Abdullah Javed, this is a line. Agree? लेकिन मैं इस लाइन को आई वॉन्ट टू मोल्ड दिस लाइन, तो मैंने इस लाइन को फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से पकड़कर मैंने इसको यहाँ पे रोटेट कर दिया है। सो लेट मी इरेज दिस वन नाउ। मैं ज़रा ये लाइन अभी इरेज कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? गौर कीजिएगा बेटा। ओके, मैंने लाइन को मोल्ड कर दिया। ओके अमार, आई एम गोइंग टू मोल्ड दिस लाइन अगेन। ठीक है, आई एम मोल्डिंग दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट, यस और नो? Yes, sir. ओके, आई एम इरेजिंग द लोअर पार्ट नाउ। मैं लोअर पार्ट जो है वो फिर मैंने इरेज कर दिया। नाउ अमार, यू कैन सी दैट इट इज द सेम लाइन बट in different position now. Do you agree with me or not? Yeah. And we can see that this line is parallel to this one. So that is the reason a plus b is equals to 180 degree, because angle at a line is 180 degrees. Do you agree with me or not? Yes, sir. Okay, thank you so much. Okay, proceeding, like for example, let me just make a question here in order to get the knowledge about the alternate corresponding and the vertically opposite angles. Let's try this basic question, then we can proceed with another question. Okay bacha, for example, let me just give you the value here, 60, and this is a, for example, that is b, this is c, agree, and that's d. Okay, what is the value of a bacha? What is the value of 60. a? 60 60. degree. 60. Why? What is the mathematical reason? Corresponding angles. Yes, it is corresponding angle. Corresponding angle. What is the value of C? 60 degree. Why? Vertically opposite. Alternate angle. Vertically. V- Vertically opposite. Vertically opposite to 60. यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। And C is equals to 60 degree, जैसे आपने बोला, ठीक है। Alternate to A as well. Yes or no? Hamad? Yes, sir. C is alternate to A as well. Okay. What is the value of D? D की वैल्यू क्या होगी बेटा? 120. Yes, 180 minus 60. So that would be equals to 120 degrees. So that would be 120. So beta, can I say that D plus A is equals to 180 degree? Yes, sir. Can I say that D plus A is equals to 180 degree? Yes, sir. Because it's co-interior angle, and रेहान अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था बेटा कि एंगल A 60 है, तो D देखें खुद आया 120, तो 120 प्लस 60 180 बनता है कि नहीं? Yes, sir. 180. So that is co-interior angle. Let me just turn these lines. मैं जरा इन लाइंस को थोड़ा टर्न करना चाह रहा हूँ, पैरेलल बनाने के चक्करों में। थोड़ा सा कुछ ऐसा लाइंस बनाते हैं, ठीक है। लेट मी मेक लाइन, ऐसे लेके जा रहा हूँ, एक लाइन में ऐसे ले गया, ठीक है जी। ओके, लेट मी मेक अ क्वेश्चन नाउ। फॉर एग्जांपल, इफ दिस एंगल इज 110, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ D। ओके, okay everybody, what is the amount of angle D? What is the amount of 70. angle D? Angle 70 D degree. is, yes, because angle D is equals to 70 degrees. The mathematical reason is that 110 plus D, that is equals to 180 degrees. Co-interior angle of a parallel line. We want to find out D. So 180 minus 110. So D is equals to 70 degrees. Okay, what would be the amount of C? C क्या होगा बेटा? 70 degree. Yes, why C is 70 degree beta? It is alternate as well. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So that is what the mathematical reason is all about. तो फिर मैं इसके बाद आपको ये इसमें मैं वर्कशीट्स वगैरह करवाऊंगा, आज खाली लेक्चर सुने, ठीक है।
ताकि कल हम इसमें वर्कशीट्स कर सकें। अच्छा जी, देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीगॉन्स। रिमेंबर दैट as I told you that math started from a point. When more points they joined together, they made a line. Agree? When two lines they joined together, they made an angle. When three or more lines joined together and are enclosed, so they made polygon. They made polygon. Like for example, हम ये नहीं कह सकते रेहान कि that this is a polygon. क्या मैं कह सकता हूँ कि ये polygon है? सर है। We can. It's not a polygon. It is not enclosed. यस सर, नहीं होगा। The starting and ending must be closed together. Okay. यस So सर। the smallest polygon we have is a triangle. It is a triangle. It is what? It is a triangle. In triangles we have n is equals to 3. Then we have quadrilaterals. Quadrilaterals. N is equals to 4. Then we have pentagon. Pentagon has what? N is equals to 5. N is equals to 6 is what? Hexagon. N is equals to 7 is what? हेप्टागन। Heptagon. N is equals to 8 is what? ऑक्टागन। Octagon. N is equals to 9 is what? नोनागन। Yes, it's nonagon. And N is equals to 10 is what? It's decagon. डेका। And after that, N is equals to 11 is called 11-sided polygon. ठीक है? 11-sided. So these are the names of the polygons. ठीक है? And remember that this is very much important. Enclosed. They must be enclosed. Like for example, let me just make here a polygon. मैं एक polygon बनाता हूँ यहाँ पे. Okay, what is the name of this polygon? Abdullah Javed. What is the name of this polygon? Sir, pentagon. Yes, it's a pentagon because it has 1, 2, 3, 4, 5 sides. N is equals to 5. So the name of this is pentagon. So to call a polygon, count sides. You have to count sides. आपने sides को करना है count and see कि ये कितने sided है. अगर 10 sided तक होंगे, so you will be having a name. अगर 10 से ज़्यादा हैं तो फिर नाम नहीं होगा. 11 sided और 12 sided और 13 sided और 40 sided इस तरह सब कुछ होगा. ठीक है? अब जरा समझ डालें. सर, Let me ask you a question. जी बेटा हमाद. सर्कल इज अ पॉलीगन और नॉट? क्या चीज़? सर्कल पॉलीगन है या नहीं? देखें, सर्कल के बारे में एक चीज़ जरा पहले जरा समझ डालें. ठीक है? पहली बात तो ये है कि सर्कल, आप पॉलीगॉन की जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखी उसमें डेफिनेशन में उसने क्या कहा? 3 और मोर लाइंस. यस और नो? यस सर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सर्कल लाइन से बनता है कि नहीं? नो सर। किस से बनता है? आर्क से। आर्क से, या एक और एक नाम ले लो जरा. बेटा याद रखें, सर्कल इट डज नॉट कंसिस्ट any straight lines, so that is the reason circle is not a polygon. ठीक है? सर्कल कर्व से बन रहा है. ठीक है? और पॉलीगॉन जो है वो बेटा लाइन से बनते हैं और लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है. समझ आ गई आपको? कर्व में और लाइन में फर्क है. इज दिस क्लियर? सो रिमेंबर दैट सर्कल इज नॉट अ पॉलीगॉन. ठीक है? सर्कल पॉलीगॉन नहीं होता. अब एक बात मुझे बताएं, क्या नाम है जरगाम? n इज इक्वल टू 3. नाम क्या होगा बेटा? ट्राइंगल. ठीक है? Yes, sir. बेटा कितने एंगल्स होते हैं ट्राइंगल में? Sir, 3. 3 एंगल्स. अब अगर मैं आपसे पूछूं n is equals to 8, so what is the name? Sir, octagon और 8 Ex- angles हो गए.
वेरी गुड। तो मैं बस ये सुनना चाहता था कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें 8 एंगल्स होंगे। अब याद रखें, अगर कोई भी पॉलीगॉन है, लाइक फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट ड्रॉ अ ट्राइंगल हेयर। मैंने एक ट्राइंगल आपके सामने बना दिया है। एक मिनट, जरा मैं जरा ट्राइंगल कुछ ऐसा बनाना चाह रहा हूँ कि ये एक की जैसे लेंथ नजर आए। तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्राइंगल? इक्विलेटरल। नहीं, अभी नहीं है, अब इक्विलेटरल हुआ। समझ आई आपको? जी सर। Because all sides are same, it is equilateral triangle. Okay. Okay, now in this polygon I will be having two things. One is interior angle, and another one is exterior angle. एक एंगल एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल होगा, दूसरा एंगल बेटा एक्सटीरियर एंगल होगा। इंटीरियर एंगल का बेटा फॉर्मूला है टोटल इंटीरियर एंगल का, यहाँ पे टोटल इंटीरियर एंगल, और ये लिखता हूं मैं टोटल एक्सटीरियर एंगल। टोटल इंटीरियर एंगल का बेटा फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, एंड टोटल एक्सटीरियर एंगल इट इज इक्वल टू 360। ये कैसे होता है मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट सम ऑफ द एंगल इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री? ऑल ऑफ यू नो दिस, राइट? यस सर। As we know that triangle has three sides, so total angle of the triangle would be 3 minus 2 times 180. 1 times 180 is equals to 180. It is proved. Yes or no? यस सर। Okay, let's show. Look at the triangle, please. जरा मैं ट्राइंगल थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, जरा थोड़ा समझ अच्छा आएगा। जरा मैं आपको ट्राइंगल ये बना के दिखा रहा हूँ। प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी। थोड़ा सा गौर से सुनना जरूरी है ताकि आपका लिंक बन जाए। ईशा, आई से दैट दीज थ्री sides are same, so that's very obvious that this angle is 60, 60, 60. Yes or no? Yes. Okay, total angle is C 180. Okay, now exterior angle. जरा देखें बेटा, exterior angle with the ground is what? With the ground is 120. Yes or no? Look at this. यस सर। With the ground is 120. Yes or no? See, with the ground is what? 120. Yes or no? See, there are three interiors and three exteriors. So 120 plus 120 plus 120 is equals to 360. Proved or not that sum of the total exterior angle is equals to 360? Yes or no? And total interior angles of equilateral triangle 60 plus 60 plus 60. So that is equals to 180 degree. That is also proved. What happens? What happens if you have to find out number of sides using interior and exterior angles? So remember that we have three formulas, and the first formula is that total interior angle is equals to angles is equals to n minus 2 times 180. If you want to find out one interior angle, so that would be n minus 2 times 180, but you have to divide by n as well. But this is only in the case of regular, and regular means all sides are same. ठीक है, regular के लिए, regular के बगैर नहीं. Okay. If you want to find out one exterior angle, if you want to find out one exterior angle, so the formula is 360 divided by n. 360 divided by n, and that is also the case of regular. And by regular we means that कि तमाम की तमाम साइडें भी बराबर होंगे और तमाम के तमाम एंगल भी बराबर होंगे। जरगाम बेटा, मैं एक पॉलीगॉन आपके सामने बना रहा हूँ, इसका नाम पेंटागन है, आपने भी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है? जी सर। We say that all sides are same. For example, the question यस is, सर। question है, uh, polygon above is regular. What is the name of polygon? Name of polygon. So Rehan, what is the name of this polygon?
Sir, five-sided. So it is pentagon. It is what? बेटा 5 sided नहीं लिखेंगे आप, pentagon लिखेंगे, ठीक है? Yes. Okay. Now, for example, look at requirement number B. What is the total interior? What is the total interior angle of pentagon? So we know that total interior angle is n minus 2 times 180. So 5 minus 2 times 180, 3 times 180. So that is equals to 540 degrees is the total interior angle of pentagon. They can ask you part C as well. If pentagon is regular, what is the amount of one interior angle? अगर ये regular है तो एक interior angle कितना होगा? So the formula will be the same of the total, but we have to divide by n now as well. So that would be 5 minus 2 times 180 divided by 5. 5 minus 2 times 180 is 540. 540 divided by 5 is what? 108. What? 108. Okay, now listen to me, everybody. Look at the question, please. Can I say that, bacha, this is 108? This is 108. This is 108. This is 108. Can I say that, bacha? Yes, sir. Okay, let me extend the lines. Zara dekhein beta. Can I say that this outer is 72? This outer is also 72. This outer is also 72. And this outer is also 72. And this outer is also 72. Exterior angles, yes or no? 5 इंटीरियर होंगे तो 5 एक्सटीरियर भी होंगे, राइट एमएल? Yes, sir. So you can see that part D, 72 times 5 is 360 degrees. Yes or no? Sum of interior angles, sum of exterior angles, sorry. Sum of exterior angles. Okay. For example, let me ask you a question, a camera style question. What is the size of one angle in 24-sided regular polygon? One interior लिख देता हूं इधर जी बेटा. First of all, we have to write the formula for the total interior angle. Total interior angle, and total interior angle is n minus 2 times 180. So there are 24 sides now. 24 minus 2 times 180. And Nayab, 22 times 180 is how much, bacha? 3960. Please repeat. 3960. 3960 degrees. Okay. As it is 24-sided polygon, so one angle would be 3960 divided by 24 because it's regular. तो regular का मतलब है तमाम साइडें भी बराबर और तमाम एंगल्स भी बराबर. So divide by 24 would be 165. okay 165. 165. Okay. So बेटा आपको एक बात जरा देखें बेटा ऊपर नायाब. Can I say that interior plus exterior is 180 degrees? बेटा can I say that? Yes, sir. तो क्या मैं एक्सटीरियर एंगल निकाल सकता हूँ उस 24-sided का? Yes, sir. तो exterior angle would be 180 minus interior. So that would be 15 degrees. Hamad? Yes, sir. Beta, I said a formula a few minutes ago that exterior angle, it is equals to 360 divided by n, right? Right? Yes, sir. Where n is the number of side. According to the previous concept, we got that exterior angle is 15. Yes or no?
Yes, sir. Let's check what is the value of n. If it is 15, so it will cross check our concept as well. So the answer is 24 or not? Yes, sir. So that's how you can easily use this thing. Is this clear? Yes, sir. Naya, Yes, sir. like for example, I can say that, like for example, let me write here that the total interior angle is n minus 2 times 180, right? It means that, Isha, that I have two variables in this formula. One is total and one is n. If I have one out of these two, I can easily find out the other one. Do you agree with me or not? Yes or no? Yes or no, bacha? Ahsan Javed? See, if you have one interior angle, so the formula would become something like this. See, again, we have two variables. One interior angle is one variable and n is another variable. Agree? So it means that out of two, अगर मेरे पास एक भी हो तो मैं इस्तेमाल कर सकूंगा. And Hamad, बेटा एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला में द फॉर्मूला इज 360 डिवाइड बाय n. यस और नो? देखो फिर दो वेरिएबल्स हैं और दोनों वेरिएबल्स में से एक होगा तो आप दूसरा फाइंड आउट कर पाओगे. ठीक है. और लास्ट में हमने ये थ्योरम बना लिया था कि दैट इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल it is equals to 180 degrees. That is the fact. You have to remember this. uh how many of you know that, what is question beta, what is the total angle of square? What is the total angle of square? 360. बेटा स्क्वायर का टोटल एंगल क्या होता है? 360. 360 होता है. जी सर. ओके. यार ये नोट्स कहाँ चले गए? बेटा मैं भी ये क्लास एंड कर रहा हूँ, जरा पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया यार. फिर एक काम आप लोग कर सकते हैं. हमाद, कैन यू डू मी अ फेवर? जी सर. आई थिंक बेटा कुछ इंटरनेट में इशू है कि मेरे गैजेट में इशू है. आई एम नॉट इवन गेटिंग इट. इतने नोट्स हमने बनाए गायब हो गए हैं. तो ये वीडियो जब आपको मिले तो क्या आप इसके एक नोट्स बना सकते हैं? यस सर. बेटा आप लोग ऐसा कीजिएगा, मैं अभी और नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि फिर ये पता नहीं क्या हो गया है कि अभी गायब हो गए हैं सब नोट्स मेरे. आ, आप में से किसी को आता है कि बेटा कोई विंडो अभी का ऑप्शन आया था मेरे पास, अब वो विंडो मैंने बंद कर दिया शायद. क्या किसी को ऑप्शन आता है तो ज़रा काइंडली मुझे बताइएगा. इफ़ यू नो